Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn class 9 subject Sanskrit. Today we learn first chapter Samarchan. Samarchanam in English worship. इसके अंदर वर्सेस है समर्चनन वर्सेस. The first verse we learn to read first verse is अग्निम इथे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतिज्वम होतारम रत्नधातमम. We read the verses. Okay, we arrange into prose order. The first word is Agnimasya. Agnimasya is the first word, and second word is Purohitam. Purohitam is second part, and Devam and Rutujam. We divide this word is divided in two parts. Okay, so Devam is third one, and Rutujam is fourth one. Next is Hotaram. Fifth one is Hotaram, and sixth one is Ratnadhatam. Agnim Ithe. This word is also divided in two parts. Okay, तो अग्निमम वो किस पे आएगा? 7 पे आएगा, और इथेम वो 8 पे आएगा. तो इसका प्रोज ऑर्डर वी रीड इट. यज्ञस्यम पुरोहितम देवम ऋतिज्वम. यहाँ ऋतिज्वम का रू होगा जो हम ऋषि के लिए यूज करते हैं. देवम ऋतिज्वम होतारम रत्नधातमम अग्निमम इथे. तो पुरोहितम मीन्स क्या होगा? पुरोहितम मीन्स पुरोहित या फैमिली प्रिएस्ट. यज्ञस्य, यज्ञ मीन्स सैक्रिफिशियल फायर्स हम ले सकते हैं. ओके, या यज्ञ भी ले सकते हैं. ऋत्विज्वम सैक्रिफिशियल फायर प्रिएस्ट एट अ सैक्रिफाइस. होतारम मीन्स क्या होगा? तो one who offers oblations. Okay, Ratnadhatam means one who wears gems. Ratnadhatam means one who wears gems. It means I praise ya I pray. Okay, so first we write ithem. Okay, I pray to Agni. Okay, इसका ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं. तो I pray to Agni, the family priest अर्थात पुरोहित. ओके, फैमिली प्रिएस्ट और पुरोहित डोमेस्टिक लिख सकते हो. ऑफ सैक्रिफाइस द deity luminous owing to divine light, the officiative priest of sacrifice, the offering obligations and wearing gems. We read it only translation. Okay, I pray to Agni, the preceptors of sacrifice, the purohit of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. उसका फर्स्ट verses is completed. Yeah, we learn second one. We read it first. अग्नि व्रतप्रते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राज्यताम. इदम अहमनुत्रातं सत्यम मुपेमि. तो we arrange into prose order. Okay, तो व्रतपटे क्या है? व्रतपटे फर्स्ट आएगा, अग्नि सेकंड पे आएगा, व्रतम थर्ड पे आएगा, चरिष्यामि फोर्थ वन, तटशक्यम Tata and second in divided two part. This verse is divided two part. Tata
प्लस शक्यम, तट प्लस शक्यम के 5th और 6 पे। नेक्स्ट तटमे राध्यम, तटमे इसमें डिवाइडेड 2 पार्ट, तट प्लस में तटराध्यम प्लस इदम अहम अनुटाट। This word is divided in 3 parts. Idam, aham, anutata. Satyam, upemi. Or this word is divided in 2 parts. Satyam, upemi. Okay. So Vratapate Agni. Vratapate means O sacrifice, O fire god. Yeah, the lord of vows. Okay, Vratapate. O fire god. Yeah, the lord of vows. Vratam charishyami. Vratam charishyami means I shall observe your vow. I shall observe your vow. Charishyami, observe. Okay. Shakyam, shakyam. I should be able. Shakyam means I should be able. Tatami means so. Tatami means so. Radhatam. Radhatam means made successful. Made successful. Anutata, falsehood. Anutata means falsehood. Satyam is truth. Satyam means truth. Upemi means I approach, yeah, go. I approach, yeah, go. We convert in Sanskrit into English. Okay, we translate it in English into English. O fire god, the lord of vows. O fire god, the lord of vows. I will observe your vows. I will observe your vows. Let it be made successful. Let it be made successful. Sakyam. Okay, successful. Radheta means successful. Made it successful. I shall go towards the truth from the falsehood. I shall go toward the truth from the falsehood. Okay, I read again, speak translation only. Okay. O fire god, the lord of vows, I will observe your vows. Let it be made successful. So I shall go towards the truth from the falsehood. Okay. Third one, verses we read it. Nama sambhavaya cha mayobhavaya cha nama sandkaraya cha mashkaraya cha nama shivaya cha shivtaraya cha. Okay, we arrange into prose order. तो संभवाय किस नंबर पाएगा? फर्स्ट नंबर पे. संभवाय किस नंबर पाएगा? फर्स्ट नंबर. मयोभवाय किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा. मयोभवाय किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा. च नम थर्ड पर आएगा. च नम थर्ड पर आएगा. संजकराय च, संजकराय नंबर किस पे आएगा? फोर्थ पे आएगा. मस्कराय च वो नेक्स्ट. ओके, उसके बाद शिवाय च, शिवतराय च, और लास्ट में एक नम ले लो ना, नम. ओके, नम आएगा लास्ट में, नम. तो संभवाय मनोभवाय च नम, संधकराय च नम, मस्कराय च नम, शिवाय च, शिवतराय च नम. उसका प्रोज ऑर्डर में अरेंज हो गए. तो संभवाय मीन्स क्या होगा? फ्रॉम हु वेलफेयर, फ्रॉम हुम वेलफेयर या हैप्पीनेस इज बॉर्न. फिर और उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा? हैप्पीनेस इज बॉर्न. मयोभवाय फ्रॉम हु हैप्पीनेस इज बॉर्न, फ्रॉम हु हैप्पीनेस इज बॉर्न. संकराय मीन्स क्या होगा? वन हु कॉज वेलफेयर, वन हु वेयर
causes welfare. Mas करायो तो who causes happiness, who causes happiness. शिव टरायो to the one who is very auspicious, क्या होगा auspicious, one who is very auspicious. नमा मीन्स क्या होगा सैल्यूटेशंस, क्या होगा सैल्यूटेशंस. ओके, the third one is translation. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and lead to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Okay, क्या होगा सैल्यूटेशन टू द वन हु गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस. सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेल बीइंग्स एंड लीड्स टू हैप्पीनेस. सैल्यूटेशन टू द वन हु इज द फाइनल ब्लिस एंड हु ब्रिंग्स greater welfare. Okay, so friends, we learn 3 verses in this video. Again 3 verses we learn in next video. So thank you.